Okay, so let triangle have equal vertical angles and their areas are in the ratio 9:16. What will be the ratio of their corresponding heights? Now, let this is one isolated triangle and this is another isolated triangle. Now, given that their vertical angle are equal, let this angle is theta, and it is also known that this is isolated triangle. So, their base angle will also equal. This would be x, this would be x, and this would also be x. So these two triangles are similar. Now if triangles are similar, then ratio of their area is equal ratio of square of their corresponding heights or sides. Now in this case we have to calculate their ratio of their height, so it's square. Now area 9 and 16 ratio, then height upon height 2 square. So h1 upon h2 would be 3 by 4. Answer of this question is C. Okay, next question. O is the circumcenter of triangle ABC. Okay, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Now this triangle ABC, O is its circumcenter. Now this is O. Now join this, and there would be a circle like this. Now O is the circumcenter of the triangle ABC. If angle BAC is 50, because this is angle on center, so that would be double of it, and because this is radius OB and OC, this angle would be 40, this would also be 40. So answer of this question is A option. Okay, next question. The perimeter of two similar triangles are 30 and 20. If one side of the first triangle is 9, then determine the corresponding side of the second triangle. ABC and PQR. Given that these two triangles are similar. Now, ratio of their side 1 upon side 2 is equal perimeter of 1 upon perimeter 2. देखो, when two triangles are similar, then the ratio of their side is always equal to ratio of their perimeter. Any side, but in this case, if one side of the triangle 9, so let this S1 is 9, we have to calculate S2. Perimeter of first is 30 and perimeter of second is 20. So S2 would be 9 into 2 by 3 or 6 centimeter. Answer is B option. Next question. If in a triangle ABC, B and CF are two medians perpendicular to each other, okay, and if AB is 19 and AC is 22, then what is the length of BC? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Now this is given that B, A and C. Given that this BE median and CF median are perpendicular. देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, F is the midpoint. इस डायग्राम से कंफर्म नहीं हो, लेकिन हाँ कंफर्म है कि ये मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा. सेम वे E is the midpoint of CA. Given that length of AB is 19 and length of CA is 22, so this would be 22, 11, and this would be 11, and this would be 19 by 2, and this would be 19 by 2. Okay, now one more important condition, when two median meet, that point is known as centroid and G, and it divide this ratio in this side in the ratio 2:1 and this side ratio 2:1. So we'll assume that let this side is 2x, so this would be x, this 2y, this would be y. Okay, now in triangle BGF, देखो using Pythagoras, 2y square 4y square plus x square is equal 19 square by 2 square, and in triangle CGE, 4x square plus y square is equal 11 square. Now adding these two, so ये हो जाएगा 5x square plus 5y square is equal 361 upon 4 plus 121. Now solve कर लो इसको. 361 plus 484, it is 5 4 845 upon 4. Okay, this is what 5x square plus y square. Now we have to calculate length of BC. Now BC is what? BC square would be 4x square plus 4y square. Now 4 कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ यहाँ से क्या करो, 4 इधर लियो, 5 नीचे लियो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4 वुड बी 845 अपॉन 5 और 169. So this is 169. So BC square is equal 169, BC would be 13, and this question is very important for your examination. Answer is A option. Okay, next question. Two circle of radii 10 centimeter and 8 centimeter intersect and the length of the common chord is 12, then the distance between their center is. Now, and this question is also very interesting. We have
two circle of radius 10 and 8, given that this radius is 10 and this radius is 8, and length of common chord is given as 12, so this part would be 6. अच्छा, अब एक important condition, this angle would be 90 degree, this angle would be 90 degree. Let this is PQ and this is AB and this is C. So area of right angle triangle would be half 8 into 10 from this side, and from this side it is half PQ into 6. देखो यार, ये भी तो बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी इसकी AC. नाउ हाफ कैंसिल हो गया, PQ would be 8 into 10 by 6 or 40 by 3. Now we have to calculate PQ. 40 by 3 आ गया और आंसर हो गया 13.33. अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a parallelogram PQRS, angle P is 4 times of angle Q. This is PQRS. Given that angle P, let this angle is x, so this would be 4x. Now given that angle P is 4 times of angle Q, then the measure of angle R, okay, it would also be equal to 4x. Now because this side is parallel to this side, so sum of these two angles would be 180. 4x plus x is equal 180. 5x it would be 180, then x would be 36. So 4x would be 144. Answer is C option. Okay, next question. If the area of circle is A, radius is R, so area would be pi r square, and circumference is C. C is 2 pi r. Now see, in every option there is no pi, तो इनको डिवाइड कर लो आप. तो पाई से पाई कट गया और एक r कट गया, तो 2a is equal CR. Which option? B option. Next question. In triangle ABC, a line through A cuts the side BC at D such that, देखो, in triangle ABC, a line cut BC at D and such that BD is equal, BD and DC is 4:5. This ratio is 4:5. If the area of ABD is 60, then area of ADC, let X. So the rule is area of ABD upon area of ADC. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिस रेशियो में साइड डिवाइड होती है उसी रेशियो में ये एरिया डिवाइड होता है, इज इक्वल 4:5. नाउ एरिया ऑफ ABD is 60 अपॉन एरिया ऑफ ADC is equal 4:5. So area of ADC would be 60 into 5 upon 4, 15, 5 जा 75. देखो अच्छा, ये हुआ कैसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना. हम करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ से पॉपुलर ड्रॉ करते हैं. तो देखो एरिया ऑफ ABD क्या होगा, हाफ, अगर ये 4x साइड है, ये 5x साइड है, तो हाफ 4x इंटू, लेट दिस इज E, AE. देखो उसका बेस ABD का बेस हो गया BD जो कि 4x है, अपॉन एरिया ऑफ ADC, इसका बेस है हाफ 5x इंटू, देखो इसके लिए परपेंडिकुलर भी यही होगा AE, और AE कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, 4:5. तो ये आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट. A tangent drawn to a circle of radius 6 centimeter from a point situated at a distance of 10 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent. Okay. देखो यार, रेडियस है 6, ये डिस्टेंस 10 है, तो टेंजेंट कितनी हो गई 8, यूजिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A square is described in a square quarter circle in such a manner that two of its adjacent vertices lie on the two radii at an equal distance. देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, from the center, while the other two vertices lie on the circular arc. If the square has side of length x, then the radius of the circle is. Now देखो क्वेश्चन का डायग्राम समझ लो. कुछ ऐसे डायग्राम होगा, ये हो गया, ये हो गया और ऐसे कुछ हो गया. Because it is given that a square is inscribed in a quarter circle in such a manner that two of its adjacent vertices lie on the two radii at an equal distance. मतलब ये distance और ये distance equal होगी. Okay, and other two lies on arc, lie on circular arc. Okay, इसकी side आपको x दी हुई है. Okay, this side is A, this side is A. तो this angle would be 45. Now if this is x, this A would be x by root 2. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझना. This is 90 degree, this would also be 45. Now join this.
ओके, दिस इज x बाई टू. नाउ नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. देखो ए सी जो होगा ये एक रेडियस होगी ना, ए सी, और ये इधर ये होगा. अगर हम ए सी निकालना है दैट वुड बी अवर आंसर. अच्छा देखो, इफ दिस इज x, दिस वुड बी x बाई रूट टू, this would be x by root 2 because this angle is 45, this would also be 45. We have drawn a perpendicular line here. अब AC is our required value. AC square is equal AB square plus BC square. Now this is x root 2, this is x by root 2. तो इनको सम कर लो. x by root 2 plus x by root 2. This would be 2x by root 2 और root 2x. Now value put करो. This is 2x square, BC कितना है, x square by 2. This is 4x square plus x square by 2, AC square. So AC square would be 5x square by 2 or AC would be under root 5 under root 2x. So answer is A option. Okay. Next question. If two chords of length A unit and B unit of a circle makes angle 60 degree and 90 degree एट द सेंटर ऑफ सर्किल देन द करेक्ट रिलेशन. देखो यार, हमारे पास एक सर्किल है जिसमें एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये है. नाउ दिस कॉर्ड मेक्स एंगल 90 डिग्री ऑन द सेंटर एंड दिस कॉर्ड मेक्स एंगल 60 डिग्री ऑन द सेंटर. गिवन दैट दिस लेंथ 60 डिग्री मेक is A and this length is B. Now if this is 60, this is radius, this would also be 60. So अब ये सब A हो जाएंगे. इसका मतलब रेडियस और A इक्वल हो गए. R is equal A. Now in this triangle, now draw perpendicular. This is R. This would be B by root 2. ठीक है, and this would also be B by root 2. So wait, ये गड़बड़ हो गया. This would be B by 2. देखो यार, अगर ये पूरा B है तो ये B by 2 होगा. So ये 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर तो ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा. तो ये B बाई रूट 2. अच्छा, इनका रिलेशन क्या होगा, R, देखो ये B बाई 2 हो गया, दोनों बराबर थे. तो अब क्योंकि ये 45 एंगल है ना, सो R वुड बी B बाई 2 इंटू रूट 2. एक रूल होता है ना, अगर 45 एंगल हो, ये साइड A, ये साइड, तो ये A रूट 2 होती है. अच्छा, ये हो जाएगा कितना, रूट 2 B, सॉरी 1 अपॉन B बाई रूट 2 R. और R की वैल्यू क्या है, हमारी A आ चुकी है. A इज इक्वल B बाई रूट 2 और B इज इक्वल रूट 2 A. ठीक है, आंसर हो गया B. अब मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत गड़बड़ हो गई थी. क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार. देखो, दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज अनदर कॉर्ड. दिस मेक्स एंगल 60 डिग्री ऑन द सेंटर एंड दिस इज लेंथ A. तो देखो, अगर 60 है, दिस वुड ऑल्सो भी 60, दिस वुड ऑल्सो भी 60. इफ रेडियस इज R, देन R इज इक्वल A. पहली कंडीशन. नाउ सेकंड कंडीशन, गिवन दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज R, दिस इज R. तो अब सिंपल सी बात है, अगर ये 90 डिग्री, ये होगा R रूट 2 विच इज इक्वल टू B. तो B की वैल्यू कितनी हो गई, R रूट 2, और R की वैल्यू कितनी A, तो B इज इक्वल रूट 2 A. ये डायरेक्ट हो गया. तो कई कंडीशन हो सकती है, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी चला जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC is a cyclic triangle and the bisector of angle BAC, ABC and BCA meet at circle at P. Now this is a cyclic quadrilateral, cyclic triangle ABC. Now bisector of this angle BAC meet it at Q, ABC meet at Q and this meet at R. The measure of R, P, Q. Okay. देखो यार, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये एंगल, ये लाइन बाइसेक्टर है, दिस वुड बी A बाई 2. सो बिकॉज BP से ये एंगल बन रहा है, BP से इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, A बाई 2. हमको पूछा है एंगल RQP. ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं. नाउ सेम वे दिस एंगल वुड बी C बाई 2, तो दिस वुड ऑल्सो बी C बाई 2. तो हमको निकालना है एंगल RPQ. इट वुड बी C बाई 2 प्लस A बाई 2. right, this is C plus A. Now C plus A is 180 minus B by 2 or 90 minus B by 2. Answer is C option. Okay, next question.
The ratio of each interior angle to each exterior angle n minus 2 into 180 upon n. This is what interior angle upon 360 by n. This is exterior angle. This is equal to 3 by 1. n cancel हो गया, 180 से 2 टाइम हुआ, n minus 2 is equal 6, n would be 8. Answer of this question is B option. Next question. Two circle touch externally. The sum of their areas is 130. देखो यार, let the radius of this circle be r1 and radius of this circle be r2. So pi r1 square plus pi r2 square is equal 130 pi. Now pi cancel हो गया, r1 square plus r2 square is equal 130. And the distance between their center r1 plus r2 is equal 14. अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो, द रेडियस स्मॉलर सर्किल. ओके, दो तरीके हैं. एक तो लॉजिकल है कि भाई पहला ऑप्शन 5 है, तो अगर एक 5 होगा दूसरा कितना होगा, 9 होगा. 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25. इनका सम 130 नहीं आएगा, तो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड ऑप्शन इज 2. नाउ 1 is 2, नेक्स्ट वुड बी 12, और 12 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है भाई, 130 ज्यादा हो जाएगा ना अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा. नाउ 3 ऑप्शन लेके चलते हैं. R2 अगर 3 है तो R1 कितना होगा, 11. 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9. यस, इट गिव्स अस 130. सो आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ rhombus ABCD, angle A is 60 degree. Okay, we have to calculate this side BD and AB is 12. So देखो यार, रोम्बस में साइड बराबर होती है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होंगे, तो दिस साइड विल आल्सो बी 60. 12. आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन. ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स वाई एंड एक्स जेड आर टेंजेंट टू अ सर्किल. दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज एक्स जेड. This point is x. Now there is another tangent, ST is another tangent at point R on the circle which intersect xy at S and yz xz at T. If xy, now this length is 15 and tx, this length is 9, we have to calculate RT. Okay, we have to calculate this. Now देखो बहुत आसान सी बात है. First of all, xy is equal xz, tangent from external point, this would be 15, and if this is 9, this is 15, so this would be 6, and tz and tr would also be equal, this would also be 6. Answer is A option. Next question. ABC is a triangle and the side AB, BC and CA are produced to E. Okay, ABC is a triangle, side AB, this is produced this, BC and CA, and this is E, F and G. Angle CBE, this is 130, this is also 130. ACF, so we have to calculate GAB, we have to calculate this. देखो यार, this is 130, this would be 50, this would also be 50. Now this is exterior angle which is sum of these two, 100. Answer is D option. Okay, next question. ABCD is a cyclic quadrilateral, diagonal AC and BD meet at P. Okay, ABCD is cyclic quadrilateral, ABCD. Now diagonal AC, this is one diagonal, and diagonal BD meet at P. If angle APB, this angle is 110, and CBD, this angle is 30, we have to calculate ADB. Okay, we have to calculate this. देखो यार, if this angle is 110, this is 30, this would also be 30. Now let this is x, इन दोनों का सम 110 होगा, x plus 30 is equal 110, so x would be 18. Answer is A option. Next question. In triangle ABC, D and E are two midpoints of side. Okay, ABC, AB midpoint is D and AC midpoint is E. Angle BAC is 40 and ABC is 65. We have to calculate. देखो अगर ये midpoint है तो ये side half होगी और parallel होगी इसके. This 40, this 60, this would be 80. Okay, CED. Okay, we have to calculate this. तो देखो यार, ये 80 तो ये भी 80 होगा, parallel lines है ना, this would be 100. Answer is
ओके ये 65 है यार, दिस वुड बी 75, so this would be 75, answer would be 105, answer is B option. Okay, O is the in center of triangle PQR. Okay, A, this is P, this is Q, this is R. O is the in center, let this is a circle. O is the in center of triangle PQR. Now QPR, this angle is 50, we have to calculate angle QO. देखो यार, this is property of in center that this is angle bisector. Now if this is angle bisector, this angle would be 90 plus half angle A. So this is 90 plus 50 by 2, 25 or 115. Answer is A option. Okay, next question. AB and CD are two parallel chords of a circle lying on the opposite side of the center and the distance between them is 70. देखो यार, एक ये chord है and one chord is this, and it is given that they lies on either side, opposite side of the center, और इनके बीच की distance कितनी दे रखी है 17. Now this is AB and this is CD. The length of AB is 10 and length this is 24. The radius. Okay, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पहली बात, इसका हाफ होगा 5, इसका हाफ होगा 12. अच्छा 12, अगर देखो ये 17 है तो 12 प्लस 5 17 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तभी तो 17 हो पाएगा. और अगर ये 12 है, दिस 5, दिस वुड बी 13, सो रेडियस वुड बी 13. अब आप इसमें एक्स वाई मान के भी कर सकते थे, बट दिस इज द शॉर्टकट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. AC is transverse common tangent to two circle. Okay, now this is AC with center P. This center is P, this center is Q. Now join this. If radii of this circle be 6 and this is 3, if AC cut PQ at B and AB is 8, we have to calculate length of PQ. Okay, PQ के लिए मुझको ये चाहिए, तो let BQ be X. देखो यार, this angle would be 90, this would be 90, this angle 1, this would be 1 and this equal to, because देखो दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा अपने बराबर होगा. अब लगाते हैं 1 to 90 रूल, सिमिलरिटी का अपोजिट साइड रूल. साइड अपोजिट टू 1 इन बिगर 6, इन स्मॉलर 3, साइड अपोजिट टू 2 हमें जरूरत नहीं है, चलो छोड़ देते हैं इसको. वैसे लिख लो BC AB BA अपॉन BC. अच्छा, साइड अपोजिट टू 90, बिगर में है 8, स्मॉलर में x, हमको इन दोनों की जरूरत है. x वुड बी 3 into 8 by 6 और 4, तो x 4 आ गया, दिस इज 4, दिस इज 8, तो PQ कितना हो गया 12. आंसर इज A ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. O is the circumcenter of triangle ABC. Okay, this is a triangle ABC. Angle BAC is 85, angle BCA is 75, then angle, okay, this is or circumcenter OAC. अच्छा ठीक है, ये 85 ये 75, तो ये एंगल कितना होगा 160 20. ठीक है, ये इसका डबल होगा 40. तो अगर ये 40 है तो ये दोनों एंगल XX होंगे इनका, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी, सर्कमसेंटर है ना ये. x प्लस 40 इज इक्वल 180, तो 2x इज इक्वल 140, x वुड बी 70. आंसर इज 70 डिग्री, A ऑप्शन. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. देखो प्रॉपर्टीज बहुत यूज हो रही है क्वेश्चंस में. द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C ऑफ द ट्राइंगल ABC. ओके, ABC एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर मिलता है किस पर, O पॉइंट पर. एंगल A दिया है 100, देन द मेजर ऑफ BOC, सो दिस इज 90 प्लस हाफ एंगल A, 90 प्लस 50 और 140. आंसर इज A ऑप्शन. ओके.